Good evening, students. So, the last topic we are dealing in the second chapter is apomixy and polyembryony. Apomixy का मतलब क्या होता है? नॉर्मल जब फ्रूट की फॉर्मेशन हुई तो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ किया. After that the zygote was formed, and after that the development of the zygote leads to the formation of embryo, and then the embryo ovule changes into the seed, and the ovary as a whole changed to form the fruit. But when the fertilization do not occur, gamete formation do not occur, meiosis do not occur, and syngamy is not present, in that case the reproduction we do is totally we denote by apomixis. Development of reproductive propagules without meiosis and syngamy is called apomixis. Agamospermy means this apomixy is of two types. First, it can be vegetative, and second by agamospermy. Vegetative propagation you have learned earlier. Many types of vegetative propagations are there, but the second term we are using, new term, is agamospermy. In this type of apomixy, seeds are formed by asexual means. Now the gametes are not going to fuse with each other. That is, asexual means when a single parent is involved in reproduction, as the embryo develop without gamete fusion और विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी. तो इस तरह की एगैमोस्पर्मी के अंदर गैमीट की फ्यूजन नहीं होगी, और मियोसिस जो अक्कर होगी वो थ्रू सिनगैमी होगी. तो जो फर्स्ट टाइप की एगैमोस्पर्मी है, दैट इज एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी. एग्जाम्पल है सिट्रस. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किस तरह से फॉर्म हुआ? डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल्स. जो स्पोर्स बने थे 2n इन नेचर, विच वर 2n इन नेचर. तो 1n गैमीट बना ही नहीं, 2n स्पोरोफिटिक सेल से ही ओव्यूल जो था वो डिवेलप हुआ, और इससे क्या बन गया? एडवेंटिव एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई. सेकेंड है पार्थिनोजेनेसिस. इन पार्थिनोजेनेसिस यू हैव अर्लियर understood parthenogenesis. A small topic was there in which the fusion of the gametes do not occur, and parthenocarpic fruits we have prepared when the seed is not present. Here also formation of embryo from unfertilized egg. When the egg do not fertilized, still the embryo start developing, that is parthenogenesis. Now the third one is apospory or apogamy. Formation of embryo from any other cells of embryonic sac without fertilization. embryo का बनना किसी भी सेल से embryo sac के, that is known as fertilization. Without fertilization, that is known as apospory or apogamy.